Good afternoon to everyone. I welcome you all in this session of Enable Plus Class 12 Physics. And the topic that we are currently studying is current electricity itself. Okay, this is our day 4 on learning current electricity. Okay. In the previous lecture, what we have did, let me open first of all what we have to did in this lecture. So in this lecture, we are going to see the EMF of cell and the combination of cells. Okay. In the previous lecture, we have seen the combination of resistors. Okay. And drift velocity, that is a very beautiful concept. From the drift velocity, current density, we have understood that resistivity is a materialistic property. Okay. It is arises because of the material of the conductor. Yeah. There is no other thing that participate in the resistivity. Yeah, basically the length, shape of the particular conductor will depend. Okay. But basically that resistivity rho will depends only on the material. Yeah. What type of material you are using. Yeah. So how's your preparation going on for your midterm examination? What is the syllabus that is being coming in the midterm examination? Can anyone tell? Or it is different for every GNV, each and every GNV? Good afternoon, Darshana. How are you? Syllabus is too vast. CBSE syllabus is been asked only, na? CBSE has already reduced the syllabus. Current electricity is also coming in the upcoming exam. I am also fine. Thank you, Darshana, for asking. Current electricity is also coming in the upcoming examination for half yearly. Okay, no problem. There is no issue in that case. These examination, because board examination is the one that you must focus on, and the JE one. Clear. And I have a confidence on you guys that you will do well in the midterm examination. Yeah. I trust you all. So first of all, today in today's lecture, we are going to learn about the EMF of a cell. Okay, the most waiting topic, and then we will have a little more illustration of combination of cells. Okay. Same as we having a combination of resistor. In the same way, we are connecting the cells in series and parallel, and then we see what happens on the resulting EMF or potential difference or internal resistance. Okay. Good afternoon, JNV Bhavnagar. Okay. So let's just move. So this is the question that I want you all to just have a look at that, and not only the look, try to solve it. Giving you 1 minute to solve this question. So there are 20 electric bulbs are connected in series. If one bulb gets fused suddenly and the circuit is reconnected, then find the percentage change in illumination of all bulb and each. And by illumination, always remember when it is nothing is mentioned and illumination has been asked. So the examiner is asking for the power. So this illumination is directly here the power. Clear? Try to solve this, everyone. Meanwhile, I also start solving it.
Just match your answer. How many bulbs we have? Number of bulbs, 20. So in this case, what is the power? I have told you in the previous lecture that power is nothing but V square upon R. And this R is R equivalent. Got it? So if 20 bulbs are connected, if 20 bulbs are connected in series, okay, these are 20. So we can assume that they have a resistance. So we can assume like this, a series circuit of 20 resistors. Now you can easily find out what is R equivalent in this case. R equivalent is what? By series combination में R equivalent is R1 plus R2 plus R3. हाँ, जितने भी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है सबको ऐड कर। एंड यहाँ पे लेट से हर एक बल्ब का जो रेसिस्टेंस है वो स्मॉल आर है या कैपिटल आर, वट एवर यू वांट टू प्रेफर. सो आर इक्विवेलेंट विल बिकम 20 आर. आर इक्विवेलेंट हियर विल बिकम 20 आर. ठीक है. आर प्लस आर 20 टाइम्स, so it will become 20 आर. So what is the power or illumination in this case? Illumination in first case, so it is V square upon R equivalent. V square upon R equivalent is what? 20 R. Now when one bulb is fused, so we have to remove that bulb. So the number of total bulbs now will become 19. 19 bulbs रह जाएंगे हमारे पास. In 19 bulb में now what is the power? Let's say P dash. So these 19s are also connected in series. There is no change in the connection. So it will become V square upon 19R. Now, percentage change of illumination of all bulb. This is the power for all bulbs. This is the power for all bulbs because we are taking R equivalent. So percentage in change in power will become P dash minus P over P into 100. You can solve it. So in the place of P, you can put V square by 20R and this is V square by 19R, taking LCM and then finding out the value. It is coming out approximately 5.28%. Okay, clear? Now, if I do it for individual bulb, each bulb के लिए, so it's very simple. Just elementary mathematics you have to use. Elementary math. Power for 20 bulb. Initially तो सभी के सब सही है. Before getting fused, it is V square by 20R. So power for one bulb कितना होगा? V square upon just divide by 20. ऐसे ही तो करते हैं ना. V square upon 400R. This is the power for individual bulb before the fuse bulb. So when bulb is fused, one bulb is fused. So total number of bulb is 19. और 19 bulb से कितना पावर है? V square upon 19R. So one bulb से कितना पावर होगा now? Power generated or power illuminated in one bulb is V square upon 19 into 19R, which is V square upon 361R. Now again, illumination or percentage change in illumination for individual bulb. तो क्या होगा? Again P dash minus P divided by P 100.
Now in place of P, you have P dash, you have to put V square by 361. And in place of P, you have to put V square by 400. When you calculate, it will come around 10.4% approx. Any kind of doubt in this question, anyone? Is it clear to everyone? Everyone, is it clear to you? Yes and no? So that we can move further now in the lecture. Darshana, Esher, Sneha. अच्छा, last point. Last point is it. देखो, when one bulb is fused ना, so total number of bulb remaining is 19. 19 bulb में total power is V square upon 19 R. V square upon R equivalent. R equivalent will become 19 R because one bulb is removed. Now for 19 bulb the power is V square by 19 R. For one bulb it is V square by 19 into 19 R. It is similar to that. 10 banana 120 rupees. So one bulb is for 120 by 10. Okay. Your voice is cracking. Let me check my internet connection. Internet connection is good from my side. Check your connection, Bhavnagar. The problem is for everyone, like my voice is breaking to everyone, or it's specifically for JNV Bhavnagar. आंसर बहुत जल्दी किया करो, रैपिडली आंसर किया करो भाई, आंसर में देर मत किया करो. जितनी जल्दी आई गेट द रेस्पॉन्स उतनी जल्दी आई विल respond to the situation. I will rectify the situation. Okay. So I think in this question there is no doubt to everyone. Okay. 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 Sneha, is it clear to you now? Tell me in the chat box. Now we will discuss about the EMF of cell. What is EMF of cell? The full form of EMF is electromotive force. But it is not force actually. It is the power you can say, or the voltage difference, or the potential difference. Okay. So electromotive force is not the force. It is the potential difference two across two conductors. Okay. One is anode and one is cathode. Okay. So EMF of cell is defined as the potential difference between positive and negative electrodes in a open circuit. Okay. So यहाँ पे you can see in this is a battery or the cell first of all. So here we have two electrodes. One is positive and another one is negative. This particular cell is filled with some liquid which is termed as electrolytic solution, which is also mentioned here. This is electrolyte solution. So the difference in conductor and electrolyte is only one. When you want to transfer the charge in conductor or you want to conduct the electricity in a conductor, only the free electron will flow. But in electrolyte, both positive and negative ion will participate in the flow of ions or the flow of charge. Okay, this is the only difference. So when you see this positive plate and this negative plate, so this negative plate is attracting the positive charges and this positive plate is attracting the negative charge. So these negative charges are called anions, positive charge are called cations. Okay. Now if you will see here, so first of all I would like this EMF of a cell, इसके बारे में थोड़ा और elaborate करते हैं. ठीक है. देखो, we have two electrode here, positive and negative, and this is a load resistance R here, and there is a value of current that is I being thrown in the circuit. Okay. So we will discuss very first case. Suppose, let me change the color. Suppose the potential
potential of positive plate, पॉजिटिव प्लेट यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज लेट्स से V plus, and for negative electrode it is V minus, ठीक है। when we talk about the potential difference it is V plus minus V, because it is negative, so it is come out to be as V positive plus V negative, which is greater than 0. This is a positive quantity, ठीक है। Initially when there is no load resistance applied to the circuit, when R is equals to what? Infinity. For open circuit, R is to be infinity. There is a very large value of resistance, ठीक है। And this is also termed as open circuit. So open circuit में क्या होगा? We just remove this R. Now there is no current will flow. So in this case, what is the potential difference between VP and VN? So VP minus VN is, you can write as VP minus VA, potential difference in this electrode to the very adjacent point in electrolytic solution, ठीक है, plus or sorry minus VP minus VB minus V, ठीक है। So this is simply V plus VP minus V is nothing but the potential of positive plate. So it is V plus V minus, ठीक है। So that is the case when there is open circuit situation. But when R is present in the circuit, तो उस केस में क्या होगा? जब R सर्किट में प्रेजेंट होगा तो करंट आउटर सर्किट में पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। Vp minus Va stand for what? Vp minus Va is just representing the potential difference of this electrode with the very adjacent point of this electrolytic solution, which you can simply say this is the potential difference of the positive plate or electrode, positive electrode, ठीक है, clear? Now when the current will flow, so current will flow from positive plate to the negative plate through the resistor in the outer circuit. But in the inner circuit, if you will see, the current will pass through this P and then come to the A, and then again P to N and B and A. Okay. So in the internal circuit, if you will see, current is flowing from B to A, and on the outer circuit, the current is flowing from P to N. So this direction is opposite. So I'm writing in outer circuit. Try to understand it. In outer circuit, direction of current is P to N. In inner circuit or in electrolytic solution, in electrolyte, the direction of current is negative to positive. Okay, that is why this circuit is going to complete. Clear? Now if you will talk about the potential difference between positive electrode and negative electrode, Vp minus Va. In this case, again you will write Vp minus Va minus, अब देखो, Vp minus Va, now you are moving from A to B and there is a flow of current also. So some resistance is offered by this electrolytic solution also, because there are ion present, so they're having some collision and all.
So due to this collision, this electrolytic solution also provide a resistance to the current. So that is why we would like to write Va minus Vb, and then again what we have is you can write it as plus Vb minus V. ठीक है, और लेट्स से हमने ऑलरेडी से माइनस लिया हुआ है तो वी विल टेक इट एज माइनस. सो ये तो क्लियर है. व्हाट इज दिस विल बिकम Vp minus Va minus Vb minus Vn. It is V plus minus V minus. So we can simply say it as E. E is what? EMF of the cell. EMF of cell. क्यों बोल दे रहे हैं? देखो, EMF of cell is defined as the potential difference between positive and negative electron in an open circuit. और ये कौन सी सिचुएशन है? ये ओपन सर्किट ही तो है. तो ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल. बट इन दिस केस व्हेन द आर इज आल्सो प्रेजेंट इन द सर्किट, the total EMF that is provided by the battery is also hindered by the electrolytic solution. बिकॉज इस केस में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से करंट पास होगा तो वो करंट को हिंडर करेगा, यानी कि रेसिस्ट करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, which is termed as minus I, the value of current into R, and this is given by Ohm's law. V is equals to IR. Since I am representing it small r, this is, let's say, delta V. So this is the case when R is connected in the circuit. So the potential difference across the battery is given by epsilon minus I into R. ठीक है, where small r is what? Internal resistance of the battery or the cell. Internal resistance of shell. Clear है? What hinders the current? Actually, the current is hindered by the collisions of the ion. Because in electrolytic solution, suppose there are positive and negative electrons, positive and negative ions. ये है. अब ये जो बैटरी कनेक्टेड है इस वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ. ठीक है, तो उस वजह से जो नेगेटिव आयंस हैं जिन्हें एनायन हम बोल रहे हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाह रहे होंगे, एंड जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आना चाह रहे होंगे. इन दिस प्रोसेस दे विल हैव अ कोलिजन बिटवीन. एक स्मूथ प्रोसेस तो होने का नहीं क्योंकि सारे के सारे एक साथ ही प्रेजेंट है ना. इसलिए जब पॉजिटिव ट्राई टू मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इट विल हैव अ कोलिजन. सिमिलर वे में नेगेटिव आयन विल आल्सो हैव अ कोलिजन. So that is why that hinders the value of current. There is a resistance provided to the value of current. ठीक है, ये सिंपल ऐसा है. देखो, आप अपना हाथ हवा में ऐसे मूव करो, लेकिन अगर यही हाथ आप वाटर में मूव करोगे ऐसे तो यू विल फील सम डिफरेंस ना. दैट इज द सिंपल. क्लियर है? एनी काइंड ऑफ डाउट गाइज इन दिस? एवरीवन, एनी काइंड ऑफ डाउट? यस एंड नो? Okay. Only one student is responding. What about 53 students more? Try to answer here. आप लोग एक बात नहीं मानते मेरी, है ना. कब से मैं आपको बोल रहा हूँ यू हैव टू आंसर, यू हैव टू आंसर, बट नहीं. ये सबने नोट कर लिया होगा आई थिंक, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और आपको चीज दिखानी है. दिस, तो द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द shell is given by epsilon, which is the EMF of the cell divided by R plus R. R is the load resistance and small r is the internal resistance. Okay, I'll explain once again. Do not worry about it.
देखो वी हैव पॉजिटिव प्लेट, मैं प्लेट बोल रहा हूँ इसे इन द सिंपल टर्म. So in a shell, we have a positive plate, negative plate. The load resistance is connected. We discuss only two cases. जब load resistance connected नहीं है, which means the open circuit is there. When load resistance is connected, ठीक है. तो जब load resistance connect नहीं है, तो करंट भी फ्लो नहीं होगा. तो जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा? ईएमएफ ऑफ द बैटरी. क्योंकि ईएमएफ कैसे डिफाइन होती है? ईएमएफ इज डिफाइंड ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस इन द ओपन सर्किट, द एक्चुअल वैल्यू of potential that a battery can apply. Clear? But when we applied the load resistance, due to the movement of current, there is a loss of current or loss of EMF in the electrolytic solution because of the collision. और वो लॉस यहाँ पे दिख रहा है आपको, आई आर. ठीक है. जब इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो कर दो, किसी बैटरी को ऐसे डिजाइन कर दो कि इंटरनल रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो इन दिस केस यू विल गेट द मैक्सिमम पावर. दैट इज द सिंपल. ठीक है. Do not need to think up very much about it. ठीक है. So I is the value of current upon R plus small r. Clear? And the potential difference is given by epsilon capital R upon small r plus small r. ठीक है. देखो इसे कैसे ड्राइव करते हैं, तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं. What without being of R there is no flow of current. Why without being of R there is no flow of current? I didn't get you what you are saying. Could you please ask it very clearly, or and you can unmute yourself and then ask. You are asking ki when R is not also there, then also the current will not flow. It's simple. When you have a battery, you connect it to the load. When you have a battery, you connect it to the load. Okay? The current will flow. If you are not connected it to the load, the current will not flow because circuit is not formed. Simple. If the internal resistance is present or the internal resistance is not present. Presence of internal resistance will only decreasing the value of EMF of the cell. जो बैटरी की कैपेसिटी है, that will be disturbed by this internal resistance. ठीक है. क्लियर है. ओके. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन में देखो, व्हेन देयर इज अ चार्जिंग सिचुएशन, तो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. ऐसे चार्जिंग में क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा. अगर flow of current is like this, it means that battery is charging, and in that case the flow is given by like this, epsilon plus IR. तो जो हमने लॉस किया था ना in terms of IR, it will be recovering in the process of charging. ठीक है. So it will be given by this when the charging of batteries happen or the flow of current is from positive to negative plate. ठीक है. क्लियर है. तो यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस में क्या होगा? गेन होगा करंट का, गेन होगा ईएमएफ का. That is the gain plus IR. Clear? But when is the discharging is there, so it will be epsilon minus IR. ठीक है. तो जो बैटरी का एक्चुअल पोटेंशियल है वो कम होगा. देन दी ईएमएफ कितनी है बैटरी की? ई है. बट इन डिस्चार्जिंग इट इज कनेक्टेड टू अ लोड. सो यहाँ पे मेरी जो ईएमएफ है वो लेस देन किससे होगी? एक्चुअल ईएमएफ ऑफ द बैटरी. और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव. देखो ये हो रहा है ना नेचर के ऑपोजिट काम. लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है करंट, तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना, लॉस करना पड़ेगा. तो दिस इज दैट. व्हेन इट इज कमिंग नेचुरली पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर से लोअर आ रहा है, तो देयर इज नो नथिंग विल बी चेंज. ठीक है. आइडियल सेल के लिए जो आप पूछ रहे थे ना, ये सर आइडियल सेल के लिए दिस इज द कंडीशन. आइडियल सेल जो भी होगी उसके लिए इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी 0. ठीक है. तो इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0 फॉर आइडियल सेल. क्लियर. तो ये दो सर्किट आपको माइंड में रखने हैं, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। टर्मिनल आप ये कह सकते हो ए से बी, ऐसे बना सकते हैं टर्मिनल। द एंड्स ऑफ अ बैटरी, वन इज द पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी और शेल मे बी इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ सेल। कैसे? देखो, ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? सिर्फ एप्सिलॉन। चार्जिंग के केस में ये बढ़ गया ना, एप्सिलॉन प्लस आई आर। तो बैटरी के जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो बढ़ा दिया हमने। डिस्चार्जिंग के केस में इट इज लेस देन, एंड व्हेन देयर इज नो internal resistance, in this case V is equals to epsilon on. So that can be a assertion reason or a true false based type of question. ठीक है? So this is very important point, try to remember it. Clear है? Are you guys taking the notes of it? What do you mean by ideal cell? An ideal cell is that whose internal resistance is zero. That is really not exist. ठीक है? This is for the idealization. What is frictionless surface? What is frictionless surface? This is also the idealization. There is no such surface exist. Clear है? चलो, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करो अब। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी के सभी आंसर करेंगे भाई। ऑल ऑफ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड आंसर मी इन द चैट बॉक्स। अ सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। इस पे फोकस करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन। ठीक है? इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, एंड दिस इज AB। फाइंड आउट करो। देखो बहुत सिंपल है। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, तो ये रे वो I is equals to epsilon upon R plus R, and V is equals to epsilon R upon R plus R. Epsilon is the EMF of battery. देखो वो आया कैसे होगा। ये बैटरी कनेक्टेड है, V वोल्ट, लेट्स से इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, जस्ट सेकेंड, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस इज स्मॉल आर, और इसकी जो ईएमएफ है वो ई है, और ये लोड रेसिस्टेंस आर है इसका। ठीक है? एंड लेट्स से इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो व्हेन आई अप्लाई द ओम्स लॉ, पोटेंशियल इज गिवन बाय ई माइनस आई आर। ठीक है? ये इसका पोटेंशियल हो गया। इसे मैं कैसे लिखता हूँ? वी को आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर, एप्सिलॉन माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ पे आई कॉमन आ जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो आई की वैल्यू यहाँ से आ गई एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल। ठीक है? सिमिलरली वी के लिए आप क्या कर सकते हो? वी इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर। सबने आंसर किया क्या भाई? ओनली प्रियंका हैज आंसर। 7.5 इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड द करंट आल्सो, स्नेहा and this Acer. 53 student, 54 student is present. I want answer from each and everyone. I is nothing but what? Epsilon upon small r plus capital R. Epsilon is what? 10 volt. Small r is 5 and capital R is 15. So it will become 20. 1 by 2 ampere is the current. Okay. Half ampere current. Potential is what? Epsilon r upon स्मॉल आर प्लस आर। जब आपने करंट कैलकुलेट कर लिया तो इसकी लगाने की जरूरत ही नहीं है, आई आर लगाओ सीधा। 1/2 इंटू आर इज 15। ठीक है? अब देखो बहुत से लोग जो है ना यहाँ पे एक मिस्टेक करेंगे। तो पहले आप वो मिस्टेक करो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपने क्या मिस्टेक की।
0.5 एम्पियर, वेरी गुड. सो दिस विल कमिंग आउट एज 7.5 वोल्ट. ठीक है, क्योंकि देखो आपने ना स्मॉल आर इसी में ही कंसिडर कर लिया. ये जो करंट आपने कैलकुलेट किया है ये विद इंटरनल असिस्टेंस किया है. तो जो लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इसमें कैपिटल आर की जगह इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर प्लस आर लेना चाहिए, नहीं वो नहीं. क्योंकि उस केस में तो आप, अगर ये आप आर प्लस आर ले लोगे तो ये तो एप्सिलॉन ही आ गया. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि जब इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है सेल का, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस, वो उसकी ईएमएफ तो नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा. ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस में कितना लॉस किया इसने? 1.5. वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. क्या बात है भाई, जेएनवी कड़ापा, वेरी गुड. चलो, नाउ वी विल डिस्कस दिस थ्योरम. ठीक है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, सो दैट इज व्हाई आई इंक्लूडेड इट. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आप भी खुद से भी डिराइव कर सकते हो. वेरी गुड जेएनवी नागांव. सो इफ अ बैटरी ऑफ फिक्स्ड ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ कितना है? ई, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर is connected to a variable external resistance, which means this R can be increased or decreased. The maximum power delivered to the external resistor when R is equals to small r, मतलब जो मेरा वेरिएबल रेसिस्टर है, वेरिएबल रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर इज इक्वल्स टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी. तभी मुझे क्या मिलेगी? मैक्सिमम पावर मिलेगी. कहां से? बैटरी से. ठीक है, then in this case I am having the maximum power when variable resistor or the load resistor, you can also say load resistor equals to the internal resistor of the battery. ठीक है, क्लियर है? कैसे कर सकते हैं देख. we know that V is equals to what? Epsilon small r plus capital R into capital R. This we can say, if I draw a circuit here, this is the load, let's say variable load, this is battery, and this is the internal resistance of the battery, small r epsilon. Clear है? Now I have to calculate the maximum power delivered by this battery to this load resistance. So first of all, power का formula क्या होता है? How do we calculate power? It's V square upon R. R equivalent, we will say. V स्क्वायर में हमने ऑलरेडी आर स्क्वायर को इंक्लूड कर लिया है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इज कैपिटल आर ओनली. ठीक है, सो पी हियर इज एप्सिलॉन स्क्वायर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इनटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. दिस आर एंड आर विल कैंसिल आउट, so it will become epsilon square r upon small r plus capital R whole square. Now for maximum power, for maximum power we can say that dp by dr, because the variable is only this resistance, we can only vary the value of load resistor. Internal resistance is fixed with the battery, so this dp by dr and r will be capital is 0. तो आप जब ये कंडीशन अप्लाई करोगे, इन दिस केस यू विल फाइंड दैट कैपिटल आर इज कमिंग आउट टू बी स्मॉल आर. ठीक है, क्लियर है? एंड द वेरिएशन ऑफ पावर विद रेसिस्टेंस विल बी लाइक, it will be having a maximum value at a unique point small r. ठीक है, it is also, this graph is also termed as impedance setting, impedance setting. ठीक है, सो मैक्सिमम पावर यहां से कितनी हो जाएगी? वी स्क्वायर अपॉन 4r. क्लियर है? क्योंकि जब आप यहाँ पे रखोगे ना कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर, सो इट विल बिकम 4 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर, एंड दिस विल बी कैंसिल आउट. ठीक है, सो मैक्सिमम पावर आपके पास कितनी बनेगी? एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4r. ठीक है,
हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑपरेटेड अ रेडियो? रेडियो किस किसने चलाया? रेडियो और एफएम? एनीवन? यस एंड नो? नागांव, जेएनवी नागांव ने ओनली रेडियो चलाया भाई। ए सर, ओके। टू मोर स्टूडेंट, स्नेहा इज ऑल्सो कमिंग। वन मोर स्टूडेंट दैट हैज प्ले अ रेडियो और एफएम। वन मोर, वन मोर। नियांग होय, व्हाट अबाउट यू? ओके, देखो नाम ले लेकर के पूछना पड़ रहा है ना? तो इन दैट पर्टिकुलर एफएम और रेडियो, हैव यू सीन दैट बटन, दैट सर्कुलर बटन्स? आपने ट्यून किया है उसे? चैनल को चेंज करने के लिए ट्यून करते हैं। पता है वो क्या हो रहा है वहां? दैट इज द दिस ग्राफ, इम्पिडेंस सेटिंग। तो जब आप इधर भी ट्यून करते हो उधर भी ट्यून करते हो, आपको फेड आवाज आती है। लेकिन एक ही ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिलता है जहां पर बिल्कुल ब्राइट आवाज आती है, बिल्कुल हाई पावर वहां पे सर्किट में जाती है। एंड दैट इज फॉर दिस वैल्यू ऑफ इंटरनल। तो जब आपकी ट्यूनिंग इस इंटरनल रेसिस्टेंस को मैच कर जाती है ना, लोड रेसिस्टर की, तब जाकर के वहां पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है और आपको एक लाउड और क्लियर सिग्नल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। ठीक है, तो वहां से आप इसे रिलेट कर सकते हो। और देखो, दो दो चैनल पे एक ही आवाज आती है। आप दो बार घुमाओगे, इधर भी घुमाओगे तो वही आवाज आ रही है, लेकिन फेड आ रही है। एंड देन दूसरी तरफ घुमाओगे तो फेड आ रही है। तो द सेम पावर इज पॉसिबल, P is possible for different values of resistor। ठीक है, क्लियर है? समझे भाई कैसे एफएम में ट्यूनिंग करते हैं? ओके, चलो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल कॉम्बिनेशन। तो सेल कॉम्बिनेशन इज वेरी सिंपल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल कॉम्बिनेशन, एज द रेसिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देयर इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होगा। वी विल अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। So this is the basic series combination. First of all, when negative plate of the battery is connected to the positive plate, negative positive negative positive, ऐसे आपको alternate plate मिल रही है ना, then that connection is series connection when you get a alternating plates, positive negative positive negative। ठीक है, so this is the series connection। And in the parallel connection, positive is connected to positive. Let's see, positive is connected to this positive, this is also connected to the positive, same plates connected in the same circuit, same point, negative is also connected to the same। ठीक है, now always remember, for parallel positive positive and for series positive negative। देखो सीरीज कनेक्शन में क्या कर सकते हैं? जो सीरीज कनेक्शन है, सिंपली what we can say that E equivalent is given by equivalent EMF we have to calculate। We have to merge this circuit as a simple circuit। ऐसे सर्किट बनाना है, सिर्फ एक बैटरी और एक इंटरनल। ठीक है, तो द EMF of this battery is the combination of these two, which is equivalent, and resistance is also E R equivalent। देखो रेसिस्टेंस तो सीरीज में है, जो करंट इससे जा रहा है वही करंट इससे जा रहा है। तो E equivalent is given by E1 plus E2 plus E3 number of cells are present, so you can see this is the E। Now what is R equivalent? R equivalent is R1 plus R2 plus R3 upstream। ठीक है, so if you apply the Ohm's law, V is equals to E equivalent minus I R equivalent। तो वैल्यू ऑफ करंट विल बिकम, अगेन, अगर लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर है तो, इफ लोड रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, इट विल बिकम ई इक्विवेलेंट अपॉन
कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट। और सपोज लोड वाले भी हमारे पास बहुत सारे हैं, तो इसमें लो तो आर। V potential difference is E equivalent upon R equivalent, small r equivalent into कैपिटल आर equivalent। ठीक है, क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस एंड नो, बताओ। ओके, suppose we have n number of batteries of same EMF, n number of batteries of same EMF and same internal resistance. If E1 is equals to E2, E3 is equals to En, number is n, which is equals to E only. सारे के सारे क्या है, ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड देयर आर नंबर ऑफ सेल इज एन। सिमिलरली R1 इज इक्वल टू R2, R3, Rn इज इक्वल टू स्मॉल आर। तब ई इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ? एन टाइम्स ऑफ। क्लियर है? और आर इक्विवेलेंट कितना होगा? एन टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं भाई एवरीवन? ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में देखो, मैंने बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव, तो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इज ए व्हाट, इक्विवेलेंट सर्किट। तो वन सेल by the combination of these two, one internal resistance by the combination of these। तो इसके लिए देखो, ये रेसिस्टेंस किसमें है, सीरीज और पैरेलल? बताओ, द इंटरनल रेसिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल फॉर व्हाट दिस बैटरीज। ये बैटरी नहीं है सर्किट में, सीरीज और पैरेलल बताओ। कल ही तो बताया था भाई, ओनली वन स्टूडेंट इज आंसरिंग। इज दिस सीरीज और पैरेलल? भगत, जेएनवी, नगांव, भावनगर, एसर। एसर इज आई थिंक जेएनवी रोइंग। हाँ पैरेलल है, वेरी गुड। तो पैरेलल इज गिवन बाई वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2 प्लस वन अपॉन R3 प्लस up to this is the equivalent resistance of the battery, and the relation here is not directly in terms of E equivalent. The ratio of E equivalent or R equivalent is given E1 by R1, E2 by R2 plus E3 by R3. So if you want to calculate the internal resistance equivalent, first of all find out this value from here and then find out the equivalent with the help of this equation. Yeah, clear? अब if in series, चलो ये भी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन सोल्व करो सबसे पहले। देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल का। सेल की ईएमएफ इज गिवन, E1 और E2, R1 और R2 भी गिवन है, और लोड रेसिस्टेंस R भी गिवन है। सबसे पहले तो इसमें ई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो और आर इक्विवेलेंट, स्मॉल आर इक्विवेलेंट। जल्दी बताओ, वेरी गुड, आंसर करो फटाफट, रैपिडली। ये तो देखते ही हो जाना चाहिए।
करो भाई, आंसर बताओ। सो 1/r इक्विवेलेंट इज व्हाट? 1/r1 प्लस 1/r2, ओनली टू रेसिस्टेंस। और इसके लिए तो मैं सीधा भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, व्हेन टू रेसिस्टेंस आर गिवन इन पैरेलल, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। वेरी गुड स्नेहा। R1 R2 इज व्हाट? 1 into 2, 1 into 2 is 3, so it will become 2/3 ohm। क्लियर है? नाउ E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए, E/R इक्विवेलेंट, E1/R1 प्लस E2/R। E1 की कितनी वैल्यू है? 10 है। लेट्स से E1 इज दिस, सो 10/R1 इज दैट 2, E2 is 5, R1 is 1, so it will become 5 plus 5, which is 10, equals to E equivalent upon R equivalent is 2/3, so it will become 3/2। So E equivalent here will become 20/3 volt. Who is saying that 2/3? 2/3 is the R equivalent, good, but E equivalent is 20/3। ठीक है? Now what you have to find out? Current। करंट कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ? E equivalent upon कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है? यहां से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर वुड बी V, which is equals to E equivalent into capital R divided by capital R plus small r equivalent। ठीक है? चलो एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। Although we are out of time, but I can explain it here। Suppose these are the two batteries, three battery I am saying। ठीक है? This is R3, E3, R2, E2, R1, E1। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, बट देर इज वन प्रॉब्लम हियर। देर इज अ चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ दिस सेल। सो हाउ डू वी मेंशन दैट? E equivalent is what? E1 plus E2 minus E2। The change in polarity, change in sign। R equivalent will be same. There is no change in R equivalent। R1 plus R2 plus R, but equivalent resistance, oh sorry, equivalent EMF will change। So based on this, if we have N shell, out of which M shells are wrongly connected। ये wrong connection ही तो हुआ, wrongly connected। Find E equivalent। तो देखो कैसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी है? N है, बट उन शेल में से कितनी शेल गलत जुड़ी हुई है? M शेल। यहाँ पे एक सेल गलत जुड़ी हुई थी तो माइनस आ गया था इसी के सामने। इफ वी हैव टू सेल्स रॉन्ग कनेक्शन, तो कितनी होंगी? -2 सेल। इफ वी हैव M शेल रॉन्गली कनेक्टेड, तो -M। और -M किस में से? टोटल नंबर ऑफ सेल। ठीक है? देखो यहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट, वन इज रॉन्गली कनेक्टेड, सो 2 minus 1। So if we have N cell and M is wrongly connected, तो E equivalent is given by N minus M into E। ठीक है? क्लियर है? अब आपको ये क्वेश्चन करके लाना है। देखो ये शेल्स हैं, N शेल है, ये N।
एन शेल। और ऐसे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है मेरे पास? ऐसे ऐसे मेरे पास है एम कॉम्बिनेशन, एम रो, यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड देन एम रो। इनकी ईएमएफ ई है लेट्स से, और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है सभी का। तो आपको ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। Acer is asking change in polarity can have the tendency to flow the current. देखो flow of current is disturbed. You can see here because when you change the polarity na, and if the current is flowing like this, so this is positive to negative, which means this cell is charging. This is also charging, but this is discharging, right? There is a tendency of flow of current, but in the opposite direction because change in polarity is there. Clear? So note your homework, and I'm launching a poll. Write answer in this poll. And if anyone has any kind of doubt, you can ask right now. ये होमवर्क है, इसे जरूर करना है भाई। ठीक है, एन सेल ऐसे सीरीज में, एंड देन ऐसी एन सेल के एम सेल्स, एन सेल की एम रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? Okay, if anyone has any kind of doubt, you can ask. Otherwise, the lecture is being over. Thank you so much for being attentive and being responsive in the lecture. But response is very less compared to the strength of the student. Okay, try to be more responsive, more expressive in the lecture. Bye. Take care of yourself.